Applications of Hess law to calculate the standard enthalpy of formation of methyl alcohol from the following data. In this equation, we want to calculate the enthalpy of formation of methyl alcohol from the given data. The first equation is methyl alcohol, 1 mole of methyl alcohol reacts with 3/2 moles of oxygen and they gives 1 mole of carbon dioxide plus 2 moles of water, and the enthalpy of the standard enthalpy of reaction of first reaction is minus 726 kilojoules per mole. The second reaction is 1 mole of carbon, means graphite reacts with 1 mole of oxygen and they produces 1 mole of carbon dioxide, and it is a combustion reaction, and the standard enthalpy of the combustion reaction is minus 393 kilojoules per mole. And third reaction is the 1 mole of hydrogen reacts with 1/2 mole of oxygen and it produces 1 mole of water. In this reaction, water is formed as a major product, that's why it is the standard enthalpy of formation of water, and which is minus 286 kilojoules per mole. The solutions to calculate the standard enthalpy of formation of methyl alcohol. अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन दी नहीं है, तो पहले हम मिथाइल अल्कोहल बनाने की रिएक्शन लिखेंगे। अब मिथाइल अल्कोहल में एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम्स दिए हुए हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट साइड में हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे। सो we write the required equation is 1 mole of carbon reacts with 2 moles of hydrogen gas and 1/2 moles of oxygen and they produces 1 mole of the methyl alcohol, and we want to calculate the standard enthalpy of formation of methyl alcohol. अब पहले इसे एनालिसिस करेंगे from the given data. Look at the required equation. In this equation, methyl alcohol is present at the product site, but in the equation number 1 in the given data, it is present at the reactant site. So हमें पहले ये equation number 1 इसे हमें रिवर्स करनी होगी। और दूसरा, required equation में 2 moles of hydrogen दिए हुए, but in the equation number 3 there is a presence of only 1 mole of hydrogen. So we want to multiply the equation number 3 by factor 2. अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करते वक्त हम पूरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और एंथैल्पी इन सब को हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 इस तरह मिलेगी। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर ये कट हो जाएगा, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा, और ये जो एंथैल्पी है ये मिलेगी हमें इज इक्वल टू 572 किलो जूल्स। ओके, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 इसमें ऐड कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 3 becomes the 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen and they produces 2 moles of water, and the enthalpy of formation which is minus 572 kilojoules. अब यहाँ पर मोल नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर तैयार हुए हैं, तो पर मोल को हम निकाल देंगे। ओके, चलो इक्वेशन नंबर 2 becomes carbon plus 1 mole of oxygen, they produces carbon dioxide and their enthalpy of combustion is minus 393 kilojoules per mole. अब इसको इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। So we get 1 mole of carbon reacts with 2 moles of hydrogen plus 2 moles of oxygen. 1 मोल इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 में है और 1 मोल यहाँ पर, सो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड it gives to 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. Okay, so enthalpy of this reaction is minus 965 kilojoules. Now look at the required equation. In this equation
the methyl alcohol is present at the product side, but in the equation number 1 it is present at the reactant side. So reverse equation number 1 and it adds into the equation number 4. So equation number 1 becomes 1 mole of carbon dioxide gas plus 2 moles of water react together and they produces the 1 mole of methyl alcohol plus 3 by 2 moles of oxygen, and the standard enthalpy of this reaction is plus 726 kilojoules per mole. अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में माइनस था तो इक्वेशन रिवर्स की है हमने, इसकी वजह से ये माइनस का प्लस हो गया. सो वी ऐड द इक्वेशन नंबर 4 इन दिस इक्वेशन. सो अब दोनों इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जो जो सिमिलर सब्सटेंसेस हो गए उनको हम कैंसिल कर देंगे. ओके, इक्वेशन नंबर this there is a presence of two water molecule, and the equation number 4 there is a presence of two water molecule in the product side, we cancel it, and again the 1 mole of carbon dioxide in the equation number 4 and the 1 mole of carbon dioxide in this equation, so we cancel it. Here 4 oxygen atoms present in the equation number 4, but in the equation number and in this equation it is the 3 oxygens. 3 by 2 means 1.5, so 1.5 multiplied by 2 means 3 oxygens, so it is 3 oxygens और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन्स है. अभी 4 ऑक्सीजन में से ये 3 ऑक्सीजन हम निकाल देंगे तो 1 by 2 ऑक्सीजन रह जाएगा. सो द इक्वेशन बिकम्स 1 मोल ऑफ कार्बन, 2 moles of हाइड्रोजन एंड अभी ये 4 है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन्स है, तो बचा है 1/2 मीन्स सिंगल ऑक्सीजन, सो 1/2 ऑक्सीजन एंड द मिथाइल अल्कोहल. So we write it, the enthalpy of the reaction which becomes like here. So 5 minus 6 it is not possible, so 1 यहाँ से ऐड कर देंगे, we get 15, so 15 minus 6 we get 9. अब यहाँ पर 5 है, 5 minus 2 we get 3. अब यहाँ पर 9 है, so 9 minus 7 we get 2, and the sign of the bigger number which is minus, so minus 239 kilojoule per mole, it is the enthalpy of standard enthalpy of formation of methyl alcohol. So the standard enthalpy of formation of methyl alcohol is minus 239 kilojoules per mole. For newer and newer videos, please like and subscribe my channel and press bell icon button for updated videos.